Hello and welcome back to Divergent Reactions. Today on the channel we are reacting to another Coke Studio Season 14 Magical Journey, and this one is Kana Yaari. I've loved this series. You guys have seen my videos will know how much I love the Coke Studio series. So I'm excited once again to get into another behind the scenes, especially as a songwriter. I've found from the videos that I have seen so far, I can kind of relate to a lot of the relationships between the different artists and the producers and things. So it's always been a really interesting watch. So please like, subscribe if you haven't already, and let's go. Let's watch this and enjoy. Coke Studio, Season 14. आप पूछें कुछ मैं फिर बताऊंगा। एवा ज़्यादा कंफर्टेबल है कैमरे के आगे बनस्बत की है, लेकिन ये मुझे लगता है ये बहुत कंफर्टेबल है। अभी पता नहीं इसको क्या चल रहा है। इसकी वीडियोस देखी है आपने? हाँ, वो एक्शन क्या? करता है भाई। नहीं कौन सा वो गाना है? वो कौन सा गाना है? मर्ची गनू कंग्रे ऐसे कर रही है। मर्ची गनू कंग्रे। कना यारी गद्दारी यानी इश्क के नाम है गार एदा, यारी करते हैं फिर गद्दारी करते हैं, धोखा देते हैं। इश्क का तो नाम और निशानी नहीं है ना कहीं पे। मैं सामने वाले को कह रहा हूँ कि इस तरह इश्क नहीं होता जिस तरह आप कर रहे हो। दोस्ती इश्क इस तरह उन्होंने नहीं किया है। होती है ना, मतलब जो आप निभा रहे हो इसका मतलब ये वैसे। जी यही मतलब है। और फिर मैं आके जवाब दे रही हूँ कि ऐसा नहीं ऐसा है। यहाँ से आ जाओ। हाँ यहाँ से। 1, 2, 3, 4। बीट के साथ ही उसके। When Zulfi bhai called me up, he's like कि यार समझ के बलोची गाना है लेकिन पॉप गाना है, गाड़ियों में बजना चाहिए, नो you're sitting somewhere, ये गाना वहाँ होना चाहिए, मुझे नाचना है इस गाने पे, अब तेरी सरदर्द आने का। ओके got it noted। सर ये क्या बजा रहे हैं और उसको क्या ये दम्बूरा है सर, इसको दम्बूरा बोलते हैं। ये बलोचिस्तान का है, कल्चरल इंस्ट्रूमेंट है हमारा। ये ग्वादरी बलोची में है। कैफी भाई ने लिखा है यारी गदारी, और हमारा बलोची है सुलेमानी बलोची है, जो सिबी में डेरा बुक्टी में की हो गई गवादरी मुकरानी। अच्छा, मुझे एक्सप्लेन कर रहे थे कि आप लोग की बलोची अलग अलग है, मुझे नहीं पता था ये बात। बहुत अलग है बलूची में, असल में बहुत ऐसे हैं कि अलग अलग है। बलूचिस्तान का बलूची प्योर बलूची है, उसको हमारे भी जो यारी के कुछ रहने वाले हैं वो भी सही से नहीं समझते। ये सही। That's amazing. I knew. So, for those not familiar, I have a linguistics degree. I studied language at university. So I find dialects and things like that very interesting and fascinating. And I knew that there were a lot of different tribal languages or sort of regional languages over in that part of the world. But I didn't know necessarily that even the dialects within from town to town would be so indistinguishable. Exactly like you just said there, you know, they're very, very different dialects of the same language. You do get a bit of that in the UK. Those of you who are living in the UK watching this will know that even from, you know, one town to the next, certainly where I am in Yorkshire, you know, you've got like Leeds, Bradford, Sheffield, Rotherham, Doncaster, all these local towns have different dialects, and of which I don't talk like any of those because I moved here to this part of the world. So, and the strongest accents can be indistinguishable at times, especially if you're talking very, you know, like colloquial. I'm not going to try and do the accents because I'm terrible at them, but I didn't know that. I didn't know there was the thing over there as well. I didn't know that they were so closely so different. But yeah, let me know in the comments on that, because I just thought it was different languages. I didn't realize that within one language it so concisely could be so different. So yeah, it's fascinating.
इधर करूँगा। She's just so energetic in a way that I haven't seen before, and also just the way that she embodies her identity, not only as a woman, but like with what she chooses to wear, and how that contrasts with the energy of her music. I think is just so incredible. full तैयार. Beautiful. बैठो. Best man alive. इसका मतलब बताया सबको, बताओ ना। दोस्त जो है वो एटीट्यूड में ना रहे तो उस दोस्ती का क्या फायदा, ठीक है। Very nice. बाय दे के मन कना गेलक चुशी रोचा। इन दिनों में मुझे गिले करने चाहिए, तुम जो गिले कर रहे हो। फायदा ही नहीं, दीवा इधर धीरे बत्ती रुका, लेकिन अब कुछ बोलने का फायदा ही नहीं है। क्योंकि अब तो फायदा नहीं है, हमारी दोस्ती तो खत्म हो रही है ना। तुम मुझे ताने दे रहे हो, मैं तुम्हें ताने दे रही हूँ। वता मुतमईन कमा वतवती दिल पुरुष, मतलब खुद को ही मैंने मुतमईन किया और खुद का ही दिल तोड़ा। That's a good one. Very good. सब तुमने खुद लिखा या अम्मी से हेल्प ली है? आप इससे ही पूछें, आप कैफी से जो ये रैप करती है उसका जो मेरा जवाब ये है कि आप खलीज में रहने वाले हो, मैं लियारी का रहने वाला हूँ। आप अच्छी नींद सो जाते हो, मैं नफसियाती हो जाता हूँ। लाइट ही नहीं है। नफसियाती का वर्ड तुमने उसमें यूज किया है। ये लाइन बताओ क्या? मरचांतों में जाज़े वा चम्मे नचारे तो वश्शे वा बेवफ्साते माँ भाई मरीज़ दा नफसियाते। This is the beauty of the language. No, I mean, look at the flexibility. Yeah. मैं ले आ रही है, मैं बर्बाद हम कितनी दफा खलीज है तवे आबाद, लियारी हमारा बर्बाद। आप खलीज हो, आप आबाद हो, लियारी में तो लाइट भी नहीं है। बहुत सारे मतलब तौबा करता हूँ, बल्कि एक चक्कर नहीं 100 बार। और ये प्यार नहीं, पहले वाला प्यार अब नहीं है। That's cool. That's really cool. Really, I'm amazed at the work that's happening here, and the performers, Kafi and Eva. I'm just huge fans of theirs. खुश हैं आप? मतलब ये देखे ना, फ्रॉम लियारी ईवा सिब्बी से हमारे बुक्ति भाई आए हुए हैं। An original Balochi song in a sound that is for the loss of words global. I wish के the whole world, सारी दुनिया बलोची सुने और गाए। इस कमरे में किसी को बलोची नहीं आती, लेकिन आई एम श्योर इस गाने के वर्ड्स आते हैं। मम्मा छा तो
नॉइस नॉइस वगैरह कोई चक्कर तो नहीं है ना उसके अलावा? थोड़ा सा नहीं है। सबसे सुन लिया। I just wanted to be the most pristine recording, live recording that anyone has ever heard. ये attempt है हमारा। क्यों में कुछ नहीं है। Sound check चल रहा है हमारा। माइक आगे हो सकता है थोड़ा। कर लिए माइक की। All sounds great. अभी मेरी फिटबिट ने मुझे बताया कि पता नहीं कितने स्टेप्स हो गए हैं। Honestly सिर्फ नहीं, हम विजुअल को भी इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं because that's how you narrate stories. So now we are not just capturing the musicians performing, we are capturing their narrative, their story, the song's narrative. The sort of upbeat, joyous vibe was already kind of speaking to me, and I wanted a video that was as dynamic as the song. There are very few things that excite me, and this was something that really excited me with the set design. It's really cool. I think the biggest challenge for this thing was it's a mechanical set. It's a set that needs to move. The walls need to move. To come up with a set that was modular, that looked like small spaces connected together, but everybody's in a different space. Or aisa the walls remove hoti jati hain, and then everybody's actually in the same space vibing together. Wow, that's really cool. I didn't know that. And then when you see the entirety of it, when it's all open, it has to feel like one. Because it's a Balochi song, so I thought the set would be very traditional or us tarike ka, but this is very cool. This is like very contemporary or very colorful. The camera team with the art team needs to be in sync, the light team needs to be in sync. So everything was very meticulously pre-planned. पीछे 4 लोग खड़े हैं, उन्हें दीवार पूरी खींचनी है टाइम पे, पर हम बोल भी नहीं सकते क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है सब कुछ. So everything is, I hope वो कर देगा टाइम पे. I'm introducing you to the makeup team. I suppose also, just on a side note there, the lighting, like the way the rooms are lit, like I think they hinted on it there. If you're moving walls, it's going to change the lighting completely in that room and the camera angles. So this is such an intricate, it's more than just moving a wall. You've got to put the lighting in the right place and the camera in the right place to catch. That all goes over my head, that stuff. That's incredible. Excuse me. बीरू तुम तैयार हो गए उससे पहले? Kind of. कपड़ों का वेट कर रहे हैं. A lot of chaos, a lot of stress, a lot of madness, but we'll get this going sooner or later. Sooner, not later. Who's ready? Can you tell me? I will show you. We are good to go. We're good. मुझे अच्छा ही नहीं लगता. मैं नकाब हटाती हूँ, मुझसे रैप होता ही नहीं है. सच बात बताऊँ तो मुझे बस अब एक आदत सी हो गई है. So the look we went for today is really, really cool. We spoke to Jamal, who's the director. He had this amazing idea, lovely colors. And so the brief was to use like kind of burnt oranges, teals and stuff like that. I wish Jamal all the best. Jamal is right behind you, by the way. You can converse. Thanks, bro. Yeah. I heard all of that. कैफी के बाद जो है हमने नीचे से undercut किया हुआ है. He wanted to bring out his own curls. I think he looks really cool. He does. Especially Eva, I think she just came in and she said, मुझे पता है, कोई मसला ही नहीं है, मैंने ये करना है, हो जाएगा. Yeah, looking very cool. की बात है. Yeah. कोक स्टूडियो के लिए जब मुझे जुल्फी भाई ने कॉल की तो उन्होंने बोला कि आप मेरे साथ काम करना चाहती हैं. मैंने कहा प्रोजेक्ट क्या है, तो उन्होंने बोला कोक स्टूडियो का. मैंने कहा यार भाई कौन नहीं करना चाहेगा. मतलब बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है ये, तो इंशाल्लाह सब अच्छा होगा, यही उम्मीद है. कुछ नहीं होगा. This is your mic. ठीक है? Now it's your responsibility. माइक मिल गया. मिल गया. ओके, माइक मिल गया. Kami helping with the set. Getting paid some extra money for this, man. Why leave the work, dude? You know it's Corona. जो भी शॉट में नहीं है, प्लीज सेट को क्लियर कर दें. Kefi was also very, very enthusiastic. उसकी एनर्जी बड़ी अच्छी है, तो उसने कहा हाँ आप बताएं, हम कर दें. कल मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन है. मेरा गाना रिकॉर्ड होने वाला है कोक में. बहुत अच्छा भी लग रहा है, बहुत नर्वस भी हूँ. Tilt down करें, tilt down. Okay, roll camera, roll sound, and action.
हर सिंगर का एक ख्वाब होता है कि मैं बड़े स्टूडियो में जाऊँ, तो सिंगर का ऐसे और क्या खुशी हो सकता है उसको। It's such an upbeat and fun track, बड़ा infectious किस्म का, एकदम से आप सुनते हो और वो आपको याद हो जाता है। तो अगर आपको लैंग्वेज की समझ ना भी है, आपको गाने की फील ज़रूर आएगी। पहले भी कोक स्टूडियो देखा था, अब यहाँ आके देख रहा हूँ, ये बिल्कुल अलग है, मुख्तलिफ है, लेकिन करेंगे ज़रूर। Brilliant. Yeah, I love it. I love this series. It just gets better and better, doesn't it? Yeah, drop us some comments. Let me know your thoughts on this one and which ones I should react to next. I will get through all these eventually, so they will be coming, I promise. But yeah, thank you so much for watching, and please watch another video and subscribe if you haven't already.